Good morning, students. Once again, we are here to discuss the next topic of our biology chapter, and our recommended book is Science Biology Class 10, and we are dealing the chapter life processes. And our next topic is skin respiration. In annelids, that is earthworms, and lichens, amphibians, that is frog, exchange of gases occurs through skin. ये फ्रॉग हैं जो जिन और अर्थवर्म्स, ये सब कहाँ से अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं स्टूडेंट्स? स्किन से, क्योंकि यहाँ स्किन में क्या होता है, मोस्ट वेस्कुलर एंड परमिएबल इनका स्किन होता है. इट इज़ कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. इन अर्थवर्म द स्किन इज केप्ट मोस्ट. अर्थवर्म का तो स्किन होता है अक्सर हम मोस्ट अब देखे हो नमी रहता है बाई म्यूकस से सिक्रेटेड बाई ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, coulombic fluid and moisture of soil. Exchange of gases between oxygen dissolved in the liquid layer over the skin and carbon dioxide of blood in capillaries occur in the principle of diffusion. Oxygen is transported by the blood to the body cells where it is used in oxidation of glucose to produce एनर्जी. ये दिखाता है कि स्किन रिस्पिरेशन किस तरह से वर्क करता है, जहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है. इस तरह से ये वेन और ये आर्टरी होता है. ये ब्लड विद द मोर CO2 और लेस O2 होता है. यहाँ ब्लड विद मोर ऑक्सीजन एंड लेस CO2. इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक्सेल्ड हो जा रहा है और इनहेल हो रहा है यहाँ ऑक्सीजन का. वाटर फिल्म विथ मोर O2 लेस CO2. नाउ इट्स नेक्स्ट टॉपिक इज गिल्स रेस्पिरेशन. इन crustaceans, that is prawn, certain mollusks, that is mussels, cartilage fishes, bony fish and tadpoles of amphibians, respiration occurs through gills. It is called the branchial respiration. In this oxygen source in water, in bony fish, gills are present in gills chamber and are externally covered by covers called operculum. By the movement of opercular folds and oral valves present near the mouth, a bony fish maintains a water current which enters through mouth, passes through buccal cavity, pharynx and opercular chamber, washes the gills and goes down through opercular aperture. Exchange of oxygen of water and carbon dioxide of blood capillaries present in gill. Lamella occurs when water passes over the gills. Now tracheal respiration, students. In all these insects, cockroach, grasshoppers, etc., centipedes, millipedes and some spiders, respiratory organs are highly branched air tubes called trachea. These trachea are connected to atmosphere by minute respiratory opening called spiracles and stigmata. In cockroach, there are 10 pairs of spiracles and 2 pairs in throat and 8 pairs in abdomen. Each spiracle leads into a chamber. हर spiracle एक chamber में जाकर बदलता है called atrium, from which main trachea arises. Main trachea divides and redivides to form a fine network called tracheal intercom. The finest branches of this intercom and tracheoles, which directly end into the body cells, terminal part of the tracheoles and filled with the tracheolar fluids. So in these animals, oxygen goes directly into the body cells and blood has no role in the transportation of gases. It is because the blood of these animals is colorless, has no hemoglobin, and it is called hemolymph. And now it's time for lungs respiration, student. And lungs respiration in human. This is the human respiratory system of man. And in man, the respiration takes place with the help of lung. In many land animals, some mollusks like slugs, amphibians like toads, and other reptiles, birds, and mammals, the respiratory organs are lungs. It is also called a pulmonary respiration. In this source of oxygen is air, so these are also called air breathers. It occurs with the help of respiratory system. Respiratory system of man. It is formed of two parts: respiratory tract, lungs, respiratory organs. और respiratory tract में पहला दिखाता है
कि it is the path for fresh and fall air. It is formed of the following parts: external nares, nostrils, and nasal chambers, pharynx, glottis, and trachea and primary bronchi. External nostril, there are two large sized apertures present at the lower end of nose and above the mouth. These are of inhalation. This is how nose, pharynx, larynx, trachea, bronchus and lungs. Here are the smaller alveoli are present. It is not visible clearly in this picture. Now सेकेंड नसल चैम्बर ये सब पार्ट वाइज है जिसके द्वारा नोज और नसल चैम्बर और फेरिंग्स लाइनस के होते हुए एयर बॉडी के अंदर जाता है। ये लॉन्ग साइज्ड चैम्बर से जो इनसाइड द नोज जाता है, ये सेपरेटेड होते हैं बकल कैविटी से, जहाँ हार्ड पैलेट सपोर्टेड बाई बोन्स होता है जो सेपरेट करते ईच पार्ट बाई नसल सेप्टम से। ईच नसल चैम्बर इज लाइंड इन अ ciliated and glandular epithelium. These help in first lower hairy part filter the air. जो नीचे का लोअर हेयरी पार्ट होता है वो एयर को फिल्टर करता है ब्रीथिंग के दौरान एंड प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड इट इज लाइंड बाय ciliated epithelium with mucus secreting cells. Its middle part acts as air conditioner and brings air at the body temperature by warming or cooling the air. बीच का जो वो रहता है एयर कंडीशनर रहता है पार्ट जो बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक एयर को चेंज करता है एंड फ्रॉम वार्मिंग और कूलिंग करके। इट अपर पार्ट हेल्प्स इन स्मेलिंग, अपर का पार्ट स्मेल करता है। फेरिंग्स, इट इज अ स्मॉल चैम्बर इन विच एयर पैसेज एंड फूड पैसेज ओपन। फेरिंग्स क्या है? एक स्मॉलर चैम्बर है जहाँ एयर का पैसेज और फूड पैसेज एक दूसरे में ओपन होते हैं एंड क्रॉस ईच अदर। ग्लॉटिस क्या है? इट लाइज इन फेरिंग्स। ये ग्लॉटिस भी एक पार्ट है जो फेरिंग्स में पड़ता है। लीड्स टू द इनटू वॉइस बॉक्स एंड विंड पाइप ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड। जैसे हम लोग कोई फूड का बॉल्स निवाला देते हैं, इट कैन बी क्लोज्ड बाई ए बाई लोडेड लीफ लाइक फ्लैप। ओके स्टूडेंट्स, कॉल्ड इपिग्लोटिस। ये लीफ लाइक फ्लैप्स होता है ढक्कन की समान जो ग्लॉटिस को कवर कर देता है, इसीलिए उसको इपिग्लॉटिस बोलते हैं। सो एज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द विंड पाइप। ये ऐसा इसलिए होता है, ये फ्लैप लाइक जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है ये ग्लॉटिस को कवर कर देता है, जिसको इपिग्लॉटिस बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है इसमें क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो ये फूड का जो फूड पार्टिकल्स है वो हमारे विंड पाइप में भी चला जाएगा। एंड ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप जो रियली में इट इज़ द लॉन्ग नैरो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द नेक। इट इज़ सपोर्टेड बाय द रिंग लाइक कार्टिलेज। ये कैसा रहता है? इसके अंदर का जो लाइनिंग के जैसा रहता है, रिंग छल्ले के जैसा रहता है, कार्टिलेज का ये बना होता है। विच प्रिवेंट इट्स कोलैप्सिंग। जो ये लंबा जो पाइप है ये कोलैप्स नहीं करता है, ये मसल्स का प्योर नहीं होता है, कार्टिलेज का होता है। The upper expanded part of the windpipe is called larynx or voice box. It is called a vocal cords between the cartilage. Primary bronchi क्या होता है? There are the two small sized tubes formed by division of trachea in thorax. Each primary bronchus enters lungs of its own side. These are also supported by cartilaginous rings. Okay, that's all for today students. We will meet in the next video with the next topic, that is lungs respiratory organ. Okay, that's all for today. Thank you. Have a nice day.